and achievement of the worship of demigods and achievement of desired results are due not to the demigods but to the Supreme Personality of Godhead by arrangement. The less intelligent living entity does not know this, and therefore he foolishly goes to the demigods for some benefit. But the pure devotee, when in need of something, prays only to the Supreme Lord. Asking for material benefit, however, is not a sign of a pure devotee. Purport continued. A living entity goes to the demigods usually because he is mad to fulfill his lust. This happens when something undue is desired by the living entity and the Lord himself does not fulfill the desire. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that one who worships the Supreme Lord and at the same time desires material enjoyment is considered is contradictory in his desires. Devotional service to the Supreme Lord and the worship of a demigod cannot be on the same platform because worship of a demigod is material and devotional service to the Supreme Lord is completely spiritual. For the living entity who desires to return to Godhead, material desires are impediments. A pure devotee of the Lord is therefore not awarded the material benefits desired by less intelligent living entities who therefore prefer to worship demigods of the material world rather than engage in the devotional service of the Supreme Lord. Hare Krishna. Prabhuji, Hindi. यशोमती हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु हिंदी में अनुवाद पर? नहीं, आप यदि आपके पास में है पुस्तक तो आप नहीं तो मैं पढ़ सकता हूँ भैया। तो आप अनुवाद आगे आप करेंगे प्रभु तो मैं पढ़ लेता हूँ। आप अनुवाद भी करिए प्रभु जी प्लीज। नहीं, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं तो बीच में फंस जाता हूँ ऐसे, नहीं तो आपसे सुनेंगे प्रभु। मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू। अनुवाद और तात्पर्य हिंदी में। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तात्पर्य, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ प्रदान नहीं किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे विष्णुपाद So, before speaking about the Bhagavad Gita as it is, I'm submitting myself is not qualified to glorify the Srimad Bhagavad Gita. However, for my own purification, I'm trying to do this seva. So I seek blessings for all the assembled Vaishnavas to do this seva. तो प्रभु जी बड़े विनम्रता पूर्वक सर्वप्रथम ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं सर्वथा अयोग्य होते हुए सभी वरिष्ठ भक्तजन और जहाँ भक्तजन उपस्थित है, जो यहाँ पर उपस्थित भक्तगण, उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ जिससे मैं ये सेवा अच्छे ढंग से कर पाऊं. So today's sloga, endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desire, but in actuality, these benefits are bestowed by me alone. So Sri Krishna is referring to the previous sloga 7.21, and where Krishna is talking about how Krishna is giving faith to the particular deity. So in the previous Bhagavad Gita class, we have heard from His Grace Yasumati Nandan Prabhu, and we have detailed explanation about that previous sloga. Yo yo yam yam tanum bhakta shraddhayar chidam ichchati tasya chalam shraddham tam eva vidami aham. I am in everyone's heart as the super soul. As soon as one desire to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. So Krishna is telling about how Krishna is strengthened the faith of a particular deity of a particular person. In continuation of that that sloga, here he is saying, endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desire, but in actuality, these benefits are bestowed by me alone. Krishna is saying that even though if a person worships a particular deity, particular demigod, and obtains his desires fulfilled, but in actuality, these benefits are bestowed by me alone. So Krishna is very clearly saying that any benedictions any person is getting by worshipping any demigods, it is bestowed by Krishna only at the end. तो आज के श्लोक में ऐसे हम श्रवण कर रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं. तो ये श्लोक को पिछले श्लोक जो 21वां श्लोक है,
जिसको पिछले सप्ताह में श्रीमान यशोमती प्रभु जी ने बहुत विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या की। तो उसमें भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से मैं उनकी श्रद्धा जो है वो उसको स्थिर करता हूँ, और जब उनकी श्रद्धा उस विशेष देवताओं में स्थिर हो जाती है तो जब उनकी वो आराधना करते हैं या पूजा करते हैं तो उससे जो उनको लाभ प्राप्त होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। तो चाहे वो जिसकी भी पूजा में युक्त हो, लेकिन उनको कोई भी जो लाभ प्राप्त हो रहा है प्रतिफल, वो केवल भगवान प्रदान कर सकते हैं, केवल भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आप चाहे किसी भी देवता की जो पूजा करते हैं विशेष रूप से, उनसे जो लाभ प्राप्त होने वाला है वो केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होता है। So we are talking about the worship of the demigods, and what is the result. In order to understand that, we need to understand the position of the demigod. What is the position of the demigod? So in the teachings of Srila Prabhupada, in many places it has mentioned that in Bhagavad Gita, Krishna himself talking about the demigods and what are their positions. So I'm just make some few points about the positions of the demigod. तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये देवतागण जिनकी आराधना में कुछ लोग युक्त होते हैं, ऐसे लोग जो जैसे बताया गया पहले कि भगवान की जो भक्ति में युक्त नहीं होते हैं, 4 प्रकार के लोग, और 4 प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की नहीं बल्कि वो अन्य देवी देवताओं की आराधना में युक्त होते हैं। तो इन देवताओं की स्थिति क्या है? प्रभु जी कह रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने कई जगह पर इसकी व्याख्या की है, और उन जगहों से लेकर के मैंने यहाँ पर एकत्रित किया है समझने के लिए कि देवताओं की क्या स्थिति है। So the demigods are a pious conditioned living beings who acknowledge the supremacy of the Supreme Lord, but still having material desire. So all the demigods, the 33 crores demigods, all of them are conditioned living beings. However, they are acknowledging the supremacy of the Supreme Lord, but still they are having material desires. The exception is Lord Shiva. Lord Shiva is not comes under the Jiva Tattva. Lord Shiva also is not come under the Vishnu Tattva. He is having a separate Tattva, Shiva Tattva. Like Prabhupada used to give an example. It's like milk and yogurt both are same product, but however the simultaneously is one and different. So milk anytime can become a yogurt, but yogurt never become a milk. So in this way, this Lord Shiva is exception from these conditioned living beings. तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभु जी, sorry प्रभु जी, some part I missed प्रभु जी. Yes, Prabhu, can you able to see the slides, Prabhu ji? Yes. So I can the same thing I can. First point. Okay. Yes. तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले जो देवतागण है वो एक पुण्य आत्मा है, और वो भी जीव ही है। ये हमें समझना पड़ेगा कि वो भी जीव तत्व है, लेकिन वो पुण्य है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि वो भगवान की जो महानता है उसको वो समझते हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ वो उनके अंदर कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो जैसे यहाँ पर उसमें से भगवान शिव को इसमें से हटाया, क्योंकि भगवान शिव जो है वो इच्छाओं से परे हैं, लेकिन बाकी जो देवतागण हैं इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। उनके अंदर 5 विशेष गुण है देवताओं से। उसमें एक ये भी है कि वो इस प्रकार के जो भौतिक इच्छाएं होते हैं इससे वो प्रभावित नहीं होते, लेकिन बाकी देवतागण जो है वो भौतिक इच्छाओं से युक्त रहते हैं। हालांकि वो ऊपर की स्थिति में है, पुण्यवान जीवात्मा है, लेकिन फिर भी वो मिश्र भक्त हैं। जबकि भगवान शिव जो है, इसलिए उनको बताया गया कि वो भगवान की, जब हम सुनते हैं ब्रह्म संहिता में बताया किस प्रकार से दूध और दही का जो विकार है, क्योंकि वो उसके अधिष्ठाता है तमोगुण के,
इसके लिए वो विकार की वजह, क्योंकि विकार आवश्यक है उसके लिए, उस गुण का संचार करने के लिए, नहीं तो वो बिल्कुल उन्हीं के समान है और उससे ही उत्पन्न है भगवान से। So this any living beings can able to attain up to the position of a Brahma. Brahma is the highest living being in this material world. By having pious activity, one can attain up to the position of Brahma. So, but that is not in the case of Lord Shiva. No one can become Lord Shiva by any amount of pious activity or whatever. So. तो केवल कोई भी जीव जो है वो अगर अपने, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई अपने निहित कार्य जो उनका वर्ण है उसके प्रकार से करते हैं कई जन्मों तक, तब जाके वो ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ब्रह्मा तक की स्थिति जो है वो जीव प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए भी बहुत विधि बताई गई है। लेकिन कोई भी जीव वो शिव तत्व, शिव नहीं हो सकते। तो जो 5 विशेष गुण हैं जीवों से जो शिव जी में है, वो जीव के अंदर नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तो इसीलिए कोई भी जीव वो शिव नहीं बन सकते। So this what is the role of this demigods is the Lord awarded them a position in the universal management. So different devatas are entrusted to different departments like water department, fire department, air department, and so on. So many departments in the universal management. The demigods are awarded to particular position by the Supreme Lord Sri Krishna. तो ये जो देवता गण है वो भगवान के इस जो पूरे इस ब्रह्मांड का जो कार्य है उसको संपादित करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार। तो इसमें जैसे कि कई विभाग बनाए गए हैं, जैसे कि जल का विभाग है, वायु का विभाग है, अग्नि का विभाग है। तो इस प्रकार से ये लोग इस कार्य को संपादित करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। So we are hearing from Krishna himself that worship of demigod is not recommended, not advisable. Who is worshipping the demigod? Those who their knowledge is stolen by the material desire, they only worship demigods. All we are hearing. And also Krishna is giving a warning also. One should never disrespect demigods by understanding their relationship with Supreme Lord. For all of them are his devotees, because they are acknowledged the supremacy of the Supreme Lord. In that connection, they are the devotees of the Lord, and the Lord is empower them to manage the universal management. So in any point of time in our life, we should never disrespect demigods. We have to give proper respect to the demigods and never disrespect the demigods. This is the position of the demigods. तो हालांकि अभी हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि भगवान के यहाँ किस प्रकार से जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो देवी देवताओं की आराधना में युक्त होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना है, ये जानते हुए उनका जो संबंध है भगवान के साथ में, क्योंकि वो भगवान की जो महानता है उसको जानते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, और वो सभी भगवान के ही कार्यों में युक्त हैं। भगवान के द्वारा चुने गए वो जीव हैं, जीवात्मा हैं, जो भगवान की इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं में युक्त हैं, इसलिए वो भगवान के भक्त हैं और कभी भी हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी स्थिति है देवताओं की। So this detail is a summary of the difference between Lord Krishna and demigods. I just summarized. I took this data from the a book name called Who is Supreme, written by our dear devotee Gokul Chandra Prabhu. We are all having Prabhuji association here in Kanaya. Is the worthy disciple of His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj. यहाँ पर एक तुलनात्मक दृष्टिकोण दिया गया है। परम पुरुषोत्तम भगवान
और जो 33 कोटि जो देवतागण हैं उनके बीच में। और ये तुलनात्मक दृष्टिकोण जो है वो प्रभु जी कह रहे हैं कि वो श्रीमान गोकुल चंद प्रभु जो परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज के शिष्य हैं, योग्य शिष्य हैं, और यहाँ पर हम सबको उनका संग प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि कौन परम है, परम भगवान कौन है। तो उस पुस्तक से प्रभु जी ने ये तुलनात्मक दृष्टिकोण लिया है देवताओं और परम कृष्ण भगवान के बीच में। So we will go quick through. We are aware about all these things. So we will run through this one. So Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, and what is his aspects, and the 33 crores of demigods and their positions we have mentioned in that title. Krishna is the supreme creator, whereas the demigods are created beings. तो जैसे कि सबसे पहला इसमें बताया गया जो अंग है वो कि परम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वो परम सृष्टि करता है, रचयिता है, और देवतागण जो है वो उत्पन्न किए गए हैं, वो रचे गए हैं। So Krishna is the supreme controller, and the demigods are controlled by the Supreme Lord. परम कृष्ण भगवान परम नियंता है और 33 करोड़ देवतागण हैं वो नियंतक हैं, वो भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। So Krishna is the supremely worshipable Lord, Supreme Lord, whereas the demigods are worshippers of the Supreme. परम पुरुषोत्तम भगवान वो परम रूप से पूज्य हैं और जो देवतागण हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान को पूजते हैं। So Supreme Lord Krishna is the supreme enjoyer, and the demigods are enjoyed. परम पुरुषोत्तम भगवान परम भोक्ता है और जो देवतागण हैं वो भोग्या है। So Krishna is the supreme absolute truth. There is no other truth superior than or equal to the Supreme Lord, supreme absolute truth, whereas the demigods are relative truth. परम पुरुषोत्तम भगवान वो परम सत्य है, उनके परे और कुछ नहीं है, और देवतागण जो है वो सापेक्ष सत्य है। Krishna is the supreme personality of Godhead, whereas the demigods are the devotees of the supreme personality of Godhead. भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी देवतागण वो उनके भक्त हैं। The Krishna, the Supreme Lord, can give the supreme shelter to all the living beings thing. But whereas the demigods, their shelters are limited as well as temporary. परम पुरुषोत्तम भगवान वो परम आश्रय प्रदान कर सकते हैं, करने वाले हैं सबको, लेकिन जो देवतागण हैं वो सीमित और क्षणिक आश्रय प्रदान कर सकते हैं अपने आश्रितों को। Krishna is beyond material creation. He is not come in contact with the three gunas, whereas the demigods are within the material creations and they are subject to the modes of nature. परम पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के परे हैं, इसलिए वो त्रिगुणातीत है, लेकिन देवतागण वो इसी भौतिक सृष्टि के ही अंश हैं, इसलिए वो गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। So Krishna is the supreme benefactor, whereas the demigods, they are temporary benefactor, bestowers of limited temporary boons, themselves benefited. परम पुरुषोत्तम भगवान वो परम रूप से सबको लाभ देने वाले हैं, लेकिन जो देवतागण हैं वो क्षणिक रूप से और उनके द्वारा प्राप्त जो लाभ भी होता है वो सीमित होता है, क्षणिक वर दे सकते हैं वो, और
Prabhu, what is the last part? Themselves benefited? They themselves benefited, Prabhuji. They are not the benefactor. They themselves get benefited from the Lord. हाँ, okay. तो चूंकि वो परम लाभ वो लाभ नहीं दे पाते क्योंकि वो खुद लाभ प्राप्त करते हैं भगवान से. So Krishna is the supremely powerful, whereas the demigods are empowered by the Supreme. परम पुरुषोत्तम भगवान वो परम रूप से शक्तिशाली हैं और जो देवतागण हैं उनको शक्ति प्रदत्त किया जाता है भगवान के द्वारा. Krishna is a body, is a spiritual body. Krishna is a spiritual body, whereas the demigods' bodies are material body. परम पुरुषोत्तम भगवान का जो देह है, दिव्य देह है, वो भी चिन्मय है, आध्यात्मिक है, जबकि देवताओं को ये भौतिक शरीर प्राप्त है इसी भौतिक सृष्टि से. Krishna never influenced by Maya, and Maya is working under the guidance of the Supreme Lord, under his direction, whereas the demigods are influenced by Maya. तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते क्योंकि माया उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, लेकिन देवतागण वो माया के प्रभाव में आ सकते हैं. Krishna has the unlimited knowledge, whereas the demigods having the limited knowledge. तो भगवान श्री कृष्ण अभिज्ञ हैं और उनके अंदर असीमित ज्ञान है, लेकिन देवतागण जो है वो सीमित ज्ञान से परिपूर्ण है. Krishna only can award liberation, and demigods cannot award liberation to any living beings. तो मुक्ति प्रदान करने वाले केवल मुकुंद हैं और देवतागण कभी भी मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते किसी को, अपने आश्रितों को. So the Prabhuji is nicely summarized this difference between Krishna and demigods. From this we can very easily understand that the position, the supremacy of the Krishna and the position of demigods. तो श्रीमान गोकुलचंद्र प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से ये सार रूप में भगवान और देवताओं के बीच के अंतर को यहाँ पर प्रस्तुत किया है. So we see the difference between Krishna and the demigods and how the demigods are dependent on Krishna. So here we can see who goes to the demigod. So as Krishna mentioned, that the less intelligent living entities, they are going to the demigods for temporary boons and benefits. तो अभी हमने समझा भगवान और देवताओं के अंतर के बीच में, उनका जो अंतर है उनके बीच में, और अब कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे देवताओं के शरण में जाते हैं. तो जैसा अभी हमने अध्ययन किया पहले भी कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, वो अल्प बुद्धि वाले जीव वो देवताओं के शरण में जाते हैं. And those whose intelligence has been stolen by material desires, kritajnana, so they are going to the demigods. और जिनकी जो बुद्धि है वो माया के द्वारा हर ली गई है, जो भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि को हर लिया गया है, वो लोग भी देवताओं के पास शरण में जाते हैं. And those who are mad to fulfill their lusty desires, they are going to the demigods. और प्रभुपाद जी यहाँ पर ये शब्द देते हैं कि जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाए रहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने काम इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पागल हुए रहते हैं, वो भी देवताओं के पास जाते हैं. So in this purport, Prabhupada is mentioned that the demigods cannot award benediction to their devotees without the permission of the Supreme Lord. So in this right hand side, we can see the picture, various demigods, they are giving benedictions to their devotees. However, the final sanction, without the Krishna, they cannot give any benediction to their
devotees. प्रभु जी ने बहुत सुंदर ये स्लाइड्स बनाई हैं हम सबको समझाने के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। वो जो कुछ भी देते हैं भगवान से ही उनको प्राप्त होता है, भगवान से ही लेकर के देते हैं। So in the left hand side, I mentioned this postman is delivering the money order to the people. Maybe the small children, they don't know, like maybe postman, he himself paying the money. Whereas the elderly person, they know the money comes from where. Maybe they from our parents or from our relatives or friends, they send money and this postman delivered that money to us. Not he himself pays from his pocket. So similarly, the demigods bestowing the boons to their the living jivas are not by themselves. They are receiving from Krishna and then they are just doing the postman job. तो प्रभु जी यहाँ पर बाएं देखिए, आप बाएं तरफ एक जो पिक्चर बना है पोस्टमैन का, जो डाकिया है। तो कभी कभी डाकिया मनी ऑर्डर लेके आते हैं तो वो अपने पॉकेट से वो नहीं देते हैं, वो लक्ष्मी या जो मनी ऑर्डर जो है वो निश्चित रूप से किसी ने, कोई मित्र, कोई हमारे माता पिता, अभिभावक या हमारे रिश्तेदार, उन्होंने भेजा हुआ है। वो केवल एक ला करके हमको देने का कार्य करते हैं, अपने जेब से कुछ नहीं देते। वो उसी प्रकार देवतागण भी वो अपनी तरफ से हमें कुछ देने का अधिकार उनको नहीं है। वो जो भी लेते हैं भगवान की स्वीकृति से, भगवान से प्राप्त करके ही हमको देते हैं। So we may think that, like, what is the problem? Whether the demigod gives or Krishna is give, as long as I'm getting, I don't have any problem. We may have this question arise in our minds. तो हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर क्या समस्या है, चाहे भगवान हमें दे या देवता दे, आ तो रहा है हमारे पास और भगवान से ही आ रहा है, चाहे देवताओं के द्वारा आ रहा है, तो क्या समस्या है। So for this, we will, after a few slides, we will discuss about for this answer. तो उसके लिए हम कुछ समय पश्चात अभी आएंगे उसका उत्तर देने के लिए। So here in the Srimad Bhagavatam, it says, Akama sarva kamo va moksha kama udarati tivrena bhakti yogene yajate purusam param. So a person who has broader intelligence, whether he be full of all material desire, without any material desire, or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead. Srimad Bhagavatam 2.3.10. So in any case, whether one has a material desire or one doesn't have a material desire, whether he is desiring liberation or whatever it is, one must go to the supreme personality of Godhead only, nowhere else. तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया कि जो उदार धी, जिनकी मति उदार है, तो चाहे वो ऐसे लोग जो हैं, वो चाहे उनके अंदर भौतिक इच्छाएं हो, भौतिक इच्छाओं की कामना हो या भौतिक इच्छाओं की कामना नहीं हो या मुक्ति की कामना हो, वो केवल परम पुरुषोत्तम भगवान की ही भक्ति में तीव्रता से युक्त होते हैं, वो और किसी के पास नहीं जाते। So Prabhupada mentioned in this purport, like, Prabhupada is quoting that in Chaitanya Charitamrita, the person who is engaging in devotional service at the same time, he wants the material desire, it is a contradictory in his desires, like that Prabhupada mentioned. It is elaborately explained by Chaitanya Mahaprabhu, instruction to the Sanatana Goswami. In the Chaitanya Charitamrita, Matya Leela, 22.38 onwards, few slokas, Mahaprabhu is giving instruction to Sanatana Goswami. So here it says, Krishna kaha ame amabaja mage visaya sukha
Amrita chadi visamage ye bada murka. So Krishna says, Chaitanya Mahaprabhu says, what Krishna says here? Krishna says, if one engages in my transcendental loving service, but at the same time wants the opulence of material enjoyment, he is very, very foolish. Indeed, he is just like a person who gives up ambarisa, that means nectar, to drink poison. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। तो इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के बीच में संवाद हो रहा है चैतन्य मध्य लीला के 22वें अध्याय में। उसमें कुछ लोग इस प्रकार से वर्णन यहाँ पर बताया गया कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पास आता है इस प्रकार से कुछ भौतिक कामनाओं से युक्त होकर के, हाँ, और वो विषय की मांग करता है, कुछ भौतिक कामना की मांग करता है, तो वो तो बड़ा मूर्ख है, क्योंकि मैं तो उसको अमृत देने वाला हूं और वो मुझे विष मांग रहा है। मैं जो स्वयं की भक्ति का उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाला हूं वो अमृत के तुल्य है, और उसके बीच में वो अमृत पाने के बजाय वो विष की कामना कर रहा है। So Chaitanya Mahaprabhu is continuing there, that in the text 39 saying, since I am very intelligent, why should I give this fool material prosperity? Instead, I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet and make him forget illusory material enjoyment. So this is the answer why we should not go to the demigods. So if we go to the demigods, we are asking for some boons, they will give. By taking that boon will not lead us to the ultimate purpose of life. So we will enjoy, we will do some pious credit and we will enjoy, then again it will, we lose, then again we will struggle. The repetition of birth, death, old age and disease is, we cannot able to get out from this material world. Whereas even though we are having the material desire, we go with the, we pray to Krishna, we go to the Krishna will not give, will not entertain us. So Krishna is saying, since I am very intelligent, why should I give this fool material prosperity? So in the previous sloka, it is saying that these kind of things are like a poison. Krishna is saying, like, it literally means that why should I give this fool to a poison? Instead, I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet and make him forgetful illusory material enjoyment. This is not possible. Anyone goes to the demigods. तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं प्रभु जी यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि आगे वाले श्लोक में उसी अध्याय में 22वें अध्याय में चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में भगवान कह रहे हैं कि देखो वो तो मूर्ख है, वो अल्पज्ञानी है, वो मेरे पास विषय की कामना से आया, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, तो मैं उसको क्यों जो विष मांग रहा है, विष जैसे भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जीव भगवत धाम जाने का जो इच्छुक होता है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है, तो मैं क्यों बाधा उत्पन्न करूं, मैं क्यों उसको विष दूं? तो मैं उसको भौतिक उपलब्धि न दे करके मैं उनके हृदय में इस जो मेरे चरण कमल का जो अमृत है उसकी इच्छा को उत्पन्न करूंगा और उनको उनके हृदय से ये भौतिक कामना जो है वो बिल्कुल उसको मिटा दूंगा। प्रभु जी कह रहे हैं कि ये कार्य देवतागण नहीं कर सकते। देवतागण के पास कोई अगर जाएंगे तो अगर आपने अनुष्ठान पूर्ण किया, उनके उस प्रकार से आपने स्तुति की, तो जो आपको भौतिक लाभ चाहे वो आपके हित में हो या हित में नहीं हो वो आपको दे देंगे। लेकिन भगवान चूंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं उनको इस प्रकार की विष कामना जो कर रहे हैं, वो विषय कामना जो विष के समान है, मैं उनको अमृत के अलावा ये विष नहीं दूंगा, मैं उनको अमृत ही दूंगा। So in the next sloka explained very wonderfully that like, so Krishna will not give anything. No, Krishna will give
Mahaprabhu is explaining very nicely. Whenever Krishna is requested to fulfill one's desire, he undoubtedly does so, but he does not award anything which, after being enjoyed, will cause one to petition him again and again to fulfill further desires. So when one has other desires but engages in the Lord's service, Krishna forcefully gives one shelter at his lotus feet, where one will forget all other desires. How merciful Lord Krishna is. तो यहाँ पर आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं, just 1 minute Prabhuji, I'm just, because I have a Hindi version of Chaitanya Charitamrita Prabhuji, I'm just opening so that I can tell the right words, Prabhuji. Okay. Just 1 second, Prabhuji. No. Second 40. इसमें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्लोक खोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छा को पूर्ण नहीं करते हैं। जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरी करने की विनती की जाती है तो वे उसे अवश्य पूरी करते हैं, किंतु वे ऐसा वर नहीं देते जिसका भोग करने के बाद भी पुनः पुनः मांगने की आवश्यकता पड़े। जब किसी की अन्य इच्छाएं रहती हैं किंतु साथ ही वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो कृष्ण उसे बलपूर्वक अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, जहां वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। यस प्रभु। Yes, Prabhu. So this is the advantage of taking shelter at the lotus feet of Krishna. Even though we are full, Krishna will never give any benediction which is dangerous to us. Krishna will fulfill our needs, definitely. Krishna never fulfill our greed. So that is the reason Krishna is saying those who are going to the demigods, their knowledge is stolen. They are ignorant. So intelligent person, even though he is having the material desire, he has to go to Krishna only, not anywhere else. तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनको अपने चरण कमलों की ओर, उनको विष नदी करके अमृत की ओर उन्मुख करते हैं। और इसलिए बताया गया कि जो ये नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, वो अल्प बुद्धि वाले लोग, जिनकी इच्छाओं के द्वारा मति पूर्ण रूप से मारी गई कि नहीं मुझे चाहिए ये विषय, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। So Prabhupada says the purport, worship of demigod is material and devotional service to the Supreme Lord is completely spiritual. So Prabhupada is saying. So like Prabhupada used to give an example that how a person who is acquiring knowledge or wealth in this material world, as soon as when he quit his body, then his balance becomes zero. Again, he has to start from the scratch, from ABCD, he has to come up. Whereas when a person doing a devotional service, even though if he is unfinished his work in this lifetime, he will given a chance. Whether a person ended his life completing 20% of the devotional service, he will start the next life with like a aristocratic family or a Brahmana family, start there, and he will directly from 22nd percentage onwards he will do the devotional service. That is completely spiritual. There is no diminution in this devotional service. Whereas this worship of a demigod is a material. That means it is a temporary. It will end by this lifetime itself. बात लिखते तात्पर्य में कि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। और इसका उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी देते हैं किस प्रकार से कि
भौतिक जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए तो पुनः मृत्यु के पश्चात जब तक वो पूर्ण नहीं होता है उसको पुनः शुरुआत से, आरंभ से ही शुरू करना पड़ता है। लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान गीता में कहते हैं कि अगर स्वल्पम थोड़ा सा भी प्रयास किया गया है, अगर वो कक्षा 1 तक पहुंचे हैं तो फिर उनको 2 से करने के लिए अवसर दिया जाता है। अर्थात जो किया है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है। So here, blessings of the spiritual master attracts the causeless mercy of the Supreme Lord. So in the case of Dhruva Maharaj has the material desire. He wants to have the kingdom which is greater than his father and his grandfather Brahma. So it is a material desire. However, he, from his mother, he get the information that, in order to worship the Supreme Lord Vishnu, only you can able to get this benediction. I am unable to do anything. So she gave a very good instruction to her son. So Dhruva Maharaj came to the forest, and like Narada Muni, as a spiritual master, he's giving the instruction to and blessing Dhruva Maharaja, and he gave a mantra. So he got the blessings of Narada Muni. So in turn, within 6 very hard austerity he performed at the age of 5, he attracts the mercy of the Supreme Lord within 5 months time, 6 months time. So like Lord Vishnu is bestowing, he's come in front of him and give benediction. So that is the greatness of the blessings of the spiritual master. तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 छवि बनी हुई है, जहाँ पर ध्रुव महाराज जो है वो हम सब जानते हैं किस प्रकार से वो बड़े राज्य, अपने पितामह से भी बड़ा राज्य, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए उनके मन में जो तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, तो किस प्रकार से उनको की माता के द्वारा और फिर पुनः भगवान, जब वो आदेश मिला कि आप वन में जाकर के भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, तो हालांकि थी उनके मन में भौतिक इच्छा और वो आए भी थे उसी कारण से, लेकिन जब उनको नारद मुनि जैसे भगवान के शुद्ध भक्त का संपर्क प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसको जो विधि बताई, उस विधि के द्वारा हम सब जानते हैं किस प्रकार से वो भगवान जब प्रकट हुए तो जो भौतिक इच्छा थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। जैसा अभी हमने श्रवण किया इसके पहले श्लोक में चैतन्य चरितामृत से, जहाँ पर कि भागवतम का श्लोक है वो 5वें स्कंद का, जो चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उससे अपने चरण कमलों में शरण देता हूँ जहाँ पर वह उसकी सारी इच्छाएं भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी जो कामना हो, अगर तो भी वो ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा में युक्त होते हैं, तो ऐसी सारी इच्छाएं फिर बाद में समाप्त हो जाती है। So Prabhupada in his purport writes that Dhruva Maharaj is a very young boy. He does not undergo any study about Vedic literature, everything. He has the desire to praise and offer praise to Lord Vishnu, but he is unable to do that one. That Lord giving mercy, and by touching his conch shell on the forehead of Dhruva Maharaja and gives the knowledge. From there, immediately start Dhruva Maharaja is offering a very wonderful prayers. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज इतने छोटे से बालक हैं बिल्कुल, और कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जब वहां पर नारद मुनि की आदेशानुसार जब वो भजन में युक्त होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान ने जैसे उनको शंख से बस स्पर्श किया, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं वो अर्पित करते हैं भगवान को। जो बड़े बड़े जो आयु में परिपक्व भक्त हैं, परिपक्व अवस्था में हैं, उनके लिए भी कर पाना संभव नहीं है। So even though Dhruva Maharaj performed austerity to obtain a greater kingdom than his father and grandfather,
The moment he saw the Supreme Lord, he is lamenting that, how I aspire for this, like greater kingdom than my grandfather. It is like a glass pieces like that. He is lamenting. तो जैसे कि उन्होंने तपस्या तो की बहुत बड़े स्थान को प्राप्त करने के लिए अपने पिता और पितामह से भी, लेकिन बाद में जब वो दर्शन होता है उनको भगवत दर्शन, और जब उनको ये भगवत दर्शन होते ही पूर्ण कलमश से मुक्त हो जाते हैं, तब उनको बड़ी ग्लानि होती है, आत्मग्लानि, कि मैं कैसे ये कांच के टुकड़े के लिए, मतलब ऐसे भौतिक इच्छाओं को लेकर के मैं भगवान को प्राप्त करने आया था, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए आया था, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। तो इस प्रकार के उनको बहुत आत्मग्लानि होती है अपने ऊपर। So in the Chaitanya Charitamrita Madhya Lila introduction, Prabhupada writes, a pure devotee is the supreme transcendentalist, and one has to receive his mercy for one's dormant Krishna consciousness to be awakened. One has to associate with pure devotees. If one has firm faith in the words of a great soul, pure devotional service will awaken. तो प्रभुपाद जी चरितमृतम के मध्य लीला के जो प्रस्तावना है वहां पर प्रस्तुत करते हैं कि शुद्ध भक्त जो है वही परम आध्यात्मवादी है, और व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं उनका संग प्राप्त किया जाए, क्योंकि उनकी कृपा से ही जो हमारी सुप्तावस्था में कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावना अमृत चेतना, वो जागृत हो सकती है। बिना उनकी कृपा के ये संभव नहीं है। इसलिए ऐसे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। और अगर हमको उनके शब्दों में, ऐसे महान आत्मा जो है उनके शब्दों में पूर्ण विश्वास हो जाए, उनकी वाणी पर पूर्ण श्रद्धा हो जाए, एक निष्ठ श्रद्धा, तब शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो सकती है, जागृत हो सकती है। So from this, the purpose of Srila Prabhupada, and we understand that the worship of demigods will not give any permanent solution for our problems. At the same time, the demigods are the representative of the Supreme Lord for their universal management, and we should not disrespect for them. At the same time, whatever we need, some of us, we are still have material desires lying in our heart. We are trying to do our devotional service, but at any circumstances, we should not leave the lotus feet of Krishna and go away from him, because then everything will be finished. So we will pray. A pure devotee never ask anything from return from Lord for the service is rendered to the Supreme Lord. We also like learn from these great examples, and we should imbibe the mood to do the unalloyed devotional service to the Supreme Lord, even though we have material desires now, but we will aspire to do a pure devotional service without the tinge of material desires. तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो देवताओं के पास में और भगवान के पास में, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान के पास जाते हैं, किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन होता है। और देवताओं के पास जो अल्पज्ञानी हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग, भौतिक इच्छाओं के लिए, लेकिन उनको चूंकि उसमें उनका परम हित नहीं है, परम हित वो केवल भगवान में प्रदान कर सकते हैं। तो इस अंतर को जानते हुए फिर भी हमें देवताओं का अपमान नहीं करना है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा चयनित, जैसे हमने पहले भी हम लोगों ने श्रवण किया आज ही, कि भगवान के द्वारा चयनित वो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की इस सृष्टि के कार्य में वो भगवान की इच्छा से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में हमको भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके और किसी के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान सबका करना है,
लेकिन हृदय के अंतरंग भाव में या शरण जो हमको लेनी है अंतरंग रूप से, वो अंततः परम रूप से केवल भगवान की ही ग्रहण करनी है। So the Bhakti Rasamrita Sindhu defines the pure devotion that Anyabhilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavrutam Anukulyena Krishnanasilanam Bhaktir Uttama. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. So with this, I seek all your blessings. I should also progress in my devotional service and give up my material desires and take the shelter of the lotus feet of the Supreme Lord in association with the devotees. I'm just pause here. If you have any comments or any corrections or any questions, we can have. Hare Krishna. Thank प्रभु जी you. कह रहे हैं आपको भक्ति साम्य सिंधु में ये बताया गया कि जो शुद्ध भक्ति है उसकी परिभाषा दी गई कि जो अन्य अभिलाषा है वो शून्य होना चाहिए, ज्ञान कर्मादि से अनावृत होना चाहिए, और अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो इस प्रकार से जो भक्ति की जाती है उसी को उत्तम भक्ति कहा जाता है। प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं भी आप सबसे ये विनती कर रहा हूँ कि आप आशीर्वाद करें कि मैं भी ये सभी जो भौतिक कामनाएं हैं उससे ऊपर उठ करके और शुद्ध भक्ति की ओर प्रयास हो पाऊं, भक्तों के संग में इस दिव्य अभियान में शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास कर पाऊं। तो यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं प्रभु जी आज की ये कक्षा। किसी भक्ति कोई जिज्ञासा है, कोई टीका टिप्पणी या कोई प्रश्न है तो प्रभु से पूछ सकते हैं। अपने हाथ आप खड़े कर सकते हैं तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा।